यही मेरे को स्ट्रेस था इस पॉडकास्ट पे आने का। ये सुकृति ये फंसाएगी। मैं कहाँ गॉसिप यार। हेलो एवरीबॉडी, इट इज डे 1। सनराइज किधर? वेस्ट कोस्ट। कहाँ? कंटेंट इज व्हाट यू क्रिएट एंड कंटेंट इज व्हाट यू शुड फील आफ्टर। Yeah. सुबह 4 बजे कॉल कर देगी, अच्छा तुम सो रहे थे क्या? लाइक हाँ, नॉर्मल लोग सोते हैं 4 बजे। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछ लो। ठीक है बोलो। ऑब्वियसली आई थिंक इट्स समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। फ्लाइट में कौन सा साइड बैठो, लेफ्ट साइड की राइट साइड? तुम फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, तुम बताओ। I love being behind the camera and finding those frames and telling those stories. And I've also, I think, been very fortunate. I've worked with some incredible people. सिर्फ कंसिस्टेंसी से तुम्हारी ये YouTube की दुकान चलने नहीं वाली। अच्छी कहानियाँ बोलनी पड़ेंगी। ट्रैवल ब्रांड्स प्लीज रीच आउट। हम ऐसे पॉडकास्ट आपकी ट्रैवल में भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन एक के ऊपर एक। मूव। Hello people of internet, welcome to another episode of Badmaaash Baatein. Today we have my dearest friend, जिसको मैं कब से चाहती थी पॉडकास्ट में, पर 1 साल से ऊपर हो गया वो हो नहीं पाया। नहीं, 2021 में I asked you, I remember. But I never said no, just like for the record. मतलब वो हो नहीं पा रहा था। It just didn't happen. Yeah. Delhi is always इतना limited time, and then कैसा but लग the good रहा है? part is you're in Bombay, Yes. so we have more time. Yeah. So इस बारी मैंने कहा शिवम मैं आ रही हूँ। We have to do this. We have to do this. और उसके बाद हम और करते रहेंगे जो भी हमारे और अलग अलग तरीके के हमने सोचे थे कि हम पहाड़ों में जाके करेंगे। बट या लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि हम कैसे वी बॉन्डेड सो मच। क्योंकि मैं पहले बता रही हूँ, आई बी मैं थोड़ा ऑफेंड कर सकती हूँ शिवम को क्योंकि हम दोस्त हैं। कि मेरा ना फर्स्ट इंप्रेशन शिवम के लिए ये था कि लाइक ही इज अ लिटिल स्नोबी, बट व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग ऐसा नहीं था। यू टेल मी व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? मतलब एक होता ही है ना। I actually met you in a work setting, right? For me, that was a work shoot. Yeah. We met on that point of view shoot. या Yeah, I don't want to take names of brands because we don't associate with them anymore. But इट वाज we met at Jama Masjid Yeah. for that whole shoot and and it was exactly पहले 2020 था, then it was 2021 when we met Jan only. Jan, correct. Both the Because I remember flying to Delhi for 48 hours and finishing those 4 shoots, जिसमें से एक हमारा था। Oh. तो तब तो ऐसे थोड़ी बहुत बातें हुई थी, हमने तभी भी थोड़ी बहुत गॉसिप कर ही ली थी वैसे रिक्शा में। Yeah. इसके बारे में उसके बारे में, all of that had happened, but I think we were just like acquaintances, Yeah. creator friends, internet जो भी कह लो। But I think the Spiti trip that we took last year, उससे भी पहले we went to this event that Shamshera thing. oh my god, I am trying to forget that event. That is the one influencer marketing event I did in Delhi when I lived there, and Yeah. I don't know why I said yes to it. Okay. Because Ranbir Kapoor. We got to see, okay, the issue was not that we got to see him for 10 seconds. The issue was how we were treated. I mean, that's As somebody who's been a creator in Mumbai, there is no differentiation in Mumbai, you know, like somebody with 1 million followers and somebody with 10,000, 20,000, like our category of creators on our follower level yeah. is treated the same way in that room. Yeah. But that didn't happen That with did us. happen. We were made to sit on the basis of how many followers we had, and our time with It was very odd. it was just unnecessary. Yeah. But हाँ, so basically it was a movie event and हमको लगा कि भाई फन आएगा, but honestly हमें फन आया because of each other's company, क्योंकि That is true. we waited for the cast What? for like 2-3 hours and हम अपनी बकचोदी कर रहे हैं। ना वो इवेंट चला ना रणबीर कपूर की वो मूवी। Yeah, hard facts, but yeah. उसके बाद I think He came to promote Shamshera. Everyone kept asking him about love story. I remember. So उसी के टाइम केसरिया आया था। Correct. एंड शमशेरा ऑल्सो उसका रिलीज था एंड सब मीडिया में यही पूछे लव स्टोरिया एंड इवन द रील्स वर मेड शमशेरा भी। केसरिया का correct. I think everyone was clearly excited about Brahmastra. Yeah, but it when I need to memory. बोल दे। मैंने मूवी देखी नहीं। मैंने भी नहीं देखी। Yeah. So anyway, तो उसके बाद आई थिंक दैट इवेंट हमने काफी ज्यादा बॉन्ड कर लिया था टू नो कि ओके हमें साथ में बिठाया गया था ये बोल के तुम दोनों के फॉलोअर कम है, बैठ जाओ साथ में। तो उसके बाद हम दोस्त बन गए, हम गॉसिप कर रहे थे 2 घंटा, तो गॉसिप हो गई अच्छी खासी। एंड देन आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड टू सी, ऐसे आई यूज्ड टू सी हिज स्टोरीज, रिप्लाई करती थी। एंड देन आई सॉ दैट ही वाज इन कसौली वंस एंड randomly when हमारा फिर तब प्लान बन रहा था कि even I want to chill with you, and then suddenly Spiti happened. Correct. So we went to Spiti, like both of us, हम दोस्त थे सिर्फ, and after that उसके अलावा वहाँ पे only another creator was our friend, and बाकी सारे लोग वो unknown लोग, ठीक है।
और हम दोनों ऐसे हो गए कि ब्रो मैं हम दोनों साथ रहेंगे बाकी। और आई वाज लिजिट, मैं सबको बोल रही थी नहीं मैं शिवम के साथ रहूंगी, मैं और के साथ नहीं रहूंगी। नो, मेरा जब रूम भी अलग कर दिया था गर्ल्स के साथ, नो। हम रूम में 3 लोग थे, उसमें सुकृति घुस गई। हाँ, ऑलरेडी 3 लोग थे, मैं और आ गई साथ में। Well, that was a fun time. या बट हाँ, तो नाउ यू टेल मी, ये तो मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन हाउ आई थॉट वो पूरा बॉन्डिंग हुआ हमारा। I think through the times that we met, I knew you're crazy, या and I knew that she can pick up lines, things that I can't even think of. या She can do moment marketing on pickup lines like nobody can. या And I think the best part was you were very similar to what you are in real life, to what you portray on the internet. Like you don't have like an internet personality, because I had seen your content, right? So I knew I had a impression of, okay, Sukriti is going to be like that, like a little crazy, a little all over the place. And you were like that. And that was the best part about you. But then I think when we went to Spiti is when I sort of got to see more sides of you. या And it's not like we all have different sides, right? And we obviously tend to open up to people when we know them better. या ट्रू So I think that happened behind that gypsy when we had so much time या off-roading on our way to Spiti. So yeah, दैट इज I think it evolved. The friendship evolved. या दैट इज ट्रू। Just like our content. उसके बाद आई थिंक एनीथिंग हैपेंस तो मैं तो भाई सबसे पहले शिवम से पूछती हूँ, अच्छा ये बताओ ये कैसे करना है। एंड मैं ये नहीं सोचती कि भाई बंदा सो रहा होगा, बंदा कुछ खा रहा होगा, अभी सड़क पे गाड़ी चला रहा है वो। Yeah, like she called me a few days back. मैं बॉम्बे पहुंच गई. The day before that she called me. She said, मैं बॉम्बे आ रही हूँ. कौन सी सीट बुक करूँ? And I was like 26A, always 26A. फॉर अ सनसेट, मेरे को सनसेट देखना था क्योंकि फ्लाइट से नहीं दिखा ना, उस दूसरे साइड पे था I think. मैंने भाई एफ वाले बंदे को तो मैंने बोला यार बहुत क्यूटी था वो, पता है। एक्सचेंज कर ले. मैंने उतर के उस पे लाइन मारी, अच्छा, तो कुछ तो मिला ही एयरक्राफ्ट नहीं के. मिला यार। सो जो बंदा उसके साथ पे बैठा था ई पे, सो मिडिल सीट. मिडिल सीट, या तो उसका दोस्त था, एफ एंड ई वो फ्रेंड्स, बस बाकी आई डोंट नो बीच के। तो कन्वीनियंट. ओके. तो मैं जब हम उतर गए, आई हैड सीन देयर फेसेस, तो उतरे बेल्ट पे गए थे बैगेज कलेक्ट करने। एंड मैं बस ऐसे ही गई कुछ बात करने रैंडमली, आई डोंट नो हाउ आई स्टार्टेड दैट कॉन्वर्सेशन। मैं गई, फिर मैंने बोला पिकअप लाइन से शुरू की थी. नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही बोला था या यू गॉट व्हाट एन अमेजिंग सनसेट यू गॉट, ऐसे करके मैंने बोला उसको जाके एफ वाले को, बिकॉज मुझे उसी पे लाइन मारनी थी। सो आई वेंट देयर एंड वो कहता कि या इट वाज नाइस ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद इसका दोस्त आता, वो शुरू हो गया, पता नहीं अपनी पूरी जन्म कुंडली खोल दी उसने कि मैं भी क्रिएटर हूँ, मेरे 50,000 फॉलोअर्स। तू एफ पे लाइन मार रही थी, ई तेरे पे लाइन मार रहा था. मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे 2 पॉडकास्ट है एक ही चैनल पे, पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैंने कहा ओके, एंड अभी हम सिर्फ मतलब 4 मिनट है ही, उनका बैग आ गया, निकलने का टाइम था। एंड आई एम लाइक ब्रो व्हाट द फक, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता लगा। ले. सो आई एम सैड, मुझे दूसरे का पता लग गया। सो आई वाज ट्राइंग टू सर्च, मैंने स्टॉकिंग स्किल्स लगा। उसके स्टोरी पे उसने अपने फ्रेंड की फोटो नहीं डाली टेक ऑफ करते? नहीं डाली यार, सब हमारी अभी दिल्ली जाते वक्त होपफुली. हाँ भाई, सब हमारी तरह नहीं है ना, दिक्कत है। बट यस, हमारा तो सबको पता होता है हम कौन से प्लेन में है, कितने बजे की फ्लाइट. हाँ भाई, हम सब एकदम ऐसे। पर अब हम सीख गए हैं, अब हम ऐसे मतलब थोड़ा सा डिलेड. या अब हमारी डालते हैं. स्टोरीज, हाँ, लाइक जब हम कॉफी पी रहे होते हैं तब हम नहीं डालते. हाँ वो जाएगा, सीख गए हम. अगले दिन जाएगा, शाम को जाएगा, ऐसा। हाँ. यस दैट इज ट्रू। बट हाँ, शिवम से मतलब मेरी इतनी लाइक आई वुड से कि काफ़ी अलग अलग इंसिडेंट से अलग अलग तरह मतलब वो फ्रेंडशिप और बढ़ती गई। बट टिल डेट आई नेवर आस्क्ड हिम दिस वन क्वेश्चन, एंड दैट वाज हाउ डिड ही लाइक गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन। मैंने आज तक ये सवाल नहीं पूछा था, लाइक हाँ, और काफी सारे सवाल पूछे हैं वैसे ओवर द इयर्स. यार आई थिंक कंटेंट जस्ट हैपेंड, यू नो. या जब हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया ना, वी वांट टू बी कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स. हम अपने आप को बॉम्बे में, आई रिमेंबर वी यूज्ड टू कॉल आवरसेल्व्स इंस्टाग्रामर्स. या आई रिमेंबर बीइंग इन कॉलेज एंड टेकिंग दैट मैंडेटरी शॉट जब बारिश होती थी, वो एक बूंद के अंदर से एक फ्लावर के ऊपर, यू नो, ऑल ऑफ दैट वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर. सो इट स्टार्टेड ऑफ एज I enjoy photography, and thankfully Instagram was photo first. Yeah. So that gave photography a boost. So I started doing some internships, this and that, to become a photographer. Okay.
And somewhere down the line, we started putting our work on So Instagram. how did photography happen? Let's get there. I just started clicking pictures on my phone. Okay. I had a Samsung Note 3, Yeah. which had a... This is when I was in college in Ruya in my first year doing BMM. And bas symmetry ढूंढो, vada pav ki photo ले लो, बारिश हो रही है, oh ho ho, you know, like basic pictures. Yeah. But वो तब everyone around me used to sort of always hype me up in my college saying, oh my God, you're good at this. And I have to tell you this, I had gone to apply for the photography club in my college and they rejected me. Same. Because they said, आपके पास DSLR नहीं है. Oh. And today when I look back to those DSLR pictures, I feel like, bro, like हम तो ये phone पे कर लेते. But of course, back in the day, वो skill set भी नहीं था जो आज है. Yeah. So that's how it started actually. Did you have that black and white photos era? Of course I did. It is mandatory. It's like the starter pack to being a photographer, no? You have to take a picture of a flower. Yeah. You have to have a bunch of black and white because you suddenly feel it's retro. Street photography. Of course. Of course. असली इंडिया का इमोशन स्ट्रीट में ही तो मतलब हमको लग रहा था हम तो नैट जियो के लिए शूट कर रहे थे. But I think that's how it started. And then you know you grow with time. How did you get your first gig, like the paid gig? Oh my God, that is such a fun story. And like I hold it so close to my heart. Okay. हम जब कॉलेज में थे हम पृथ्वी थिएटर जाते थे. Okay, to have cutting chai and aloo paratha. We loved it back in the day and it was also very economical. So it was very pocket friendly to our pocket money. And हम काफ़ी जाते थे हफ्ते में 2-3 बार. जो भी बोरिंग लेक्चर होते थे वो बंक करके हम पृथ्वी. तो एक बार मैंने एक बड़ी रैंडम सी बैक इन द डे आई कॉल्ड इट अ फ्लैट ले एंड आई टुक अ पिक्चर ऐसे ऊपर से न्यूज़पेपर, आलू पराठा, चाय और समथिंग एंड आई पोस्टेड इट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई टैग्ड पृथ्वी. And they reached out to me saying, we have an event happening over the weekend and we're falling short of one intern type of a person. Would you like to come? We like your work. And I just had come back from the Andamans. So I had, my feed was like, I thought it was looking really good with all that turquoise blue water. 700D पे सब मैंने अपने ऑटो मोड पे शूट किया था. तब मैनुअल भी नहीं आता था. मैंने हाँ कह दिया, मैं चला गया to intern for a day. Yeah. And I landed up at a Zakir Hussain memorial concert, जो हर साल होता है. And I just landed up there. And I shot pictures of, I met Imtiaz Ali for the first time. But I shot this one picture of Kareena Kapoor, which blew up. And that picture got published by a bunch of publications. And this is pre-paparazzi, right? Yeah. So like I remember Insta Bollywood reposted that picture. And suddenly everyone was like, oh my God, Shivam's a photographer. And that was the first time people in like college and people I knew. How old were you? I must be 20, 20, 21. That's how old we were in college, right? 19, 20, something like that. Yeah, that reminds me, college ko bhi itne saal ho gaye ab, life. But yeah, that's how it started. That was my first proper gig with my 700D and a borrowed 50mm. Again, I didn't know anything about photography, but I did know कि ये लेंस यूज करो तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है. उतना मुझे पता था. So I chose to do this professionally because that gave me the boost that obviously after that I had to learn how to use a camera because I was like auto पे तो दाल नहीं गलने वाली अपनी, manual सीखना पड़ेगा. And of course once you learn manual there's no going back. But that's how it started, Prithvi Theatre. Wow. काफी cool story है यार. मतलब पहले में ही मैंने अपने कॉलेज में एक ब्लॉग लिखा था. क्या? How an aloo paratha led me to shooting Kareena Kapoor. Oh, nice. यार अच्छा है. नहीं good. अच्छा वो है title. But yes, so this is how you started photography. Yes. And then फिर properly उसको फिर वहीं से pursue करना start कर दिया. फिर वहीं से pursue करना start किया. And this was again pre-reels. So Instagram also respected photography a lot more. As a medium, everyone was obviously more focused. Like today we are focused so much on short content. तब ऐसे नहीं था. Everything was really about photography. Instagram was still not about, it was really about that. It wasn't about the influencer marketing. So I'm very grateful that I started in that era of Instagram because I got to connect with like-minded people in Bombay. हम photo walk पे जाते थे Sunday morning to explore the city, the Ghat, Gateway of India. That's where we met. Yeah. But yeah, I feel like Instagram really boosted my desire to be a photographer.
So with me the thing was I started like I was into ये photography और ये सब ना बहुत टाइम से. So मेरे साथ सीन ये था, my mom is a computer science teacher, so she taught me the software. अब मैंने कहा इससे कुछ बनाना है मुझे. वो जो वेकेशन की फोटोज थी उस पर आई स्टार्टेड डूइंग. मैंने कहा फोटो तो मजा नहीं आ रहा है. देन मैंने डायरेक्ट वीडियो से ही स्टार्ट किया था. Oh. या सो I don't know, for some reason I'm still I just feel that, and मेरे को उस जो लोगों से फीडबैक मिलता है I still get कि I'm better at photography, but मुझे पसंद नहीं उतना करना. I'm more into videos. So वो चीज़ आ जाती है. But I started like properly photography in like 10th grade. Oh, that's really early. Yeah, so I got a camera because मैंने वो कुछ competition जीता था ये फिल्म मेकिंग का. एंड वो पूरी फिल्म बनी थी एक आईफोन समथिंग पे. आई डोंट रिमेम्बर व्हिच वन. तब तो आईफोन मेरे also पास must नहीं be. था, किसी का और का ही था. हाँ, but तभी तो it must have been what, like iPhone 4 or 5. हाँ, 3. यही कोई होगा. तो और एंड आई एडिटेड ऑन iMovies. हाँ आई मूवी एक और था यार, सॉरी. तब मेरे पास मैक नहीं था. आई हैड दिस वो सोनी वाला. विंडोज मूवी मेकर. उस पे मैंने एडिट किया था. एंड It's fine, everyone starts somewhere. या तो आई एडिटेड एंड आई वन सम ऐसे कैश प्राइजेस जीते थे. मेरी कोई फिल्म पता नहीं कोई तो फिल्म फेस्टिवल में लंदन में ब्लो अप हो गई. मैं कहा भाई लेट्स गो. इट वाज सम पीस समिट कुछ तो था. लिंक भेजो इस फिल्म का. या उसमें एक्चुअली मैंने स्टॉप मोशन किया था एंड स्टॉप मोशन वाज नॉट लाइक अ थिंग देन. तो मैंने कहा भाई ये करेंगे. अभी मैं उसको एक पेलती गई. मतलब तब से ही वो जो चीज़ नहीं अभी करते कि वन थिंग वर्क्स तो दोबारा करते रहो. तो दैट हैपेंड. काश ये आइडिया रील्स पे चलती. वो Only if. या तो हाँ मैंने फिर वहाँ से दिस हैपेंड. फिर मैं अपने स्कूल में फिल्म मेकिंग हेड वगैरह बन गई. फिर कॉलेज में मैं कॉलेज में मैं बस डायरेक्शन लेस हो गई थी. अब यहाँ बैठे हैं. तो that happened. But you also like got something from GoPro, right? You won something. I've won 3 awards. हाँ Three क्या था awards वो as exactly? Your some photo was also featured on the. Yeah. So, क्या था? I mean, anyone can win a GoPro award if your content is shot on GoPro. Okay. And I'd taken a picture when I'd seen my first snowfall in Jammu. Yeah. And that was in Jan. Yeah. And the very next month in Feb, I'd gone to Agra. And I took a picture, I took a selfie with the Taj Mahal. And this was all inside the Taj Mahal. You're not allowed to take a tripod and all. और Yeah. तब हमारे पास वो GoPro के शॉटी वॉटी नहीं थे. तब हम सब Yeah. वो गोरिल्ला पॉड वाले कैटेगरी के थे, right? तो I'd just done like a handheld GoPro shot. And both those pictures just got selected. Back to back, they won GoPro awards. Like I won one GoPro award. Within 2-3 weeks, I won my second GoPro award. Oh. And you get like a cash prize with ये it. कितना ऑफन होता है ये? वो I don't know. अच्छा. I'm sure they would have phases कि like साल में इतने देंगे or whatever. बहुत बार मैंने उसके बाद भी submit किया है जो मैं नहीं जीता हूँ, obviously. So because मेरे को ये याद है, I was like wow this is so nice. और मेरे को and I think I also followed you for the photo, your visuals actually. मतलब इतनी well curated feed. I still struggle to do that bro. मतलब मेरे से नहीं होता. मैं कहा इतनी मेहनत, पहले तो रील बनाओ फिर तुम फीड की भी कदर करो. इतना कैसे हो सकता है? Our feed is so like it's the first impression, no? Because Yeah. it's also about you have to want to have it a certain way. My OCD gets triggered. Yeah. That's one. या मेरा भी होता है but I can't help it. हाँ, like my logic is कि ठीक है तुम्हारी reels बहुत अच्छी हैं, Yeah. तुम्हारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, sure. Yeah. But when a new person lands up on your Instagram, they are not going to open every piece of content. The Yeah. chances are they might just scroll through the first, 12, 16 pictures and be like, okay, that's a fun feed or that's not a fun feed. Yeah. I mean, today I think people just judge you on the basis of your followers. Yeah, that is Honestly. true. But yeah, so I like to sort of maintain it a certain way. Right. हाँ, so how do you do that? इतना well curated कैसे करते हो? Like मेरे को बताओ. Actually, मैं plan नहीं करता. But यार जैसे I have seen कितने से colors वगैरह इतने uniform रहते हैं उसमें. Either is it like कि Lightroom में you're using a particular setting? No. I think I just give a little thought on balancing my warm and cool tones. That's pretty much it. There isn't too much thought that goes into what the feed should look like. It's become harder now with Reels. Yeah. Because with Reels, the thumbnail is again vertical. So when you see it on the feed, it is just a part of the thumbnail. It's not the whole thing. So when you put your face, you just look like one
That आलू on your feed, that is right? So you have to be very sure of yeah. कि wide photo लो, फिर अभी हर चीज़ का reel shoot करो, फिर उसके लिए एक wide thumbnail shoot करो. So it takes a little bit of thought. What do you call yourself as a मतलब content space में if you are addressing yourself I think I just call myself a content creator. in like specific कोई genre में? I feel like all of us are, we all have one primary genre. Like I think and I would like to believe my primary genre is travel. But we're all always sharing a little bit of Everything. everything. Yeah. You know, we're all doing our OOTDs. We might not be telling people how to wear something in 5 ways and doing fashion content particularly, but we're all doing a little bit of lifestyle, little bit of food. Because I think सबके पास थोड़ा थोड़ा होता ही है. Like if I am Exactly. doing fashion, I might be interested in camera gear and all of that. So I would want to share that. So I don't want to particularly restrict myself to a category or a particular genre, but I do think travel is like my core Okay. because that's also what makes me the most happiest when I'm shooting. मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. भाई पता है मैं बता रही हूँ हम दोनों की तो मूवी चॉइसेस भी दे आर मतलब भाई उसी से मेरे को समझ आ गया शिवम इज माय सोलमेट गाइस सोल बेस्ट फ्रेंड बस हाँ मतलब आई टेल यू गाइस हम दोनों ने एक ही दिन इम्तियाज अली की फिल्म की रीड Oh shoot, yes. कोइंसिडेंस And we didn't even know this. या We didn't know this. मतलब मुझे नहीं पता था शिवम इज एक्चुअली डूइंग दिस या उसको भी नहीं पता था आई वाज डूइंग दिस तो हमारा प्लान ये था दैट लाइक अभी रिसेंटली पीवीआर री रिलीज्ड तमाशा तमाशा जब भी मैं and Valentine's week के time Valentine's week के time and there was- Titanic and like a bunch of yeah. films. So Shivam went and watched Tamasha, made a reel of it. Obviously. I went to watch Jab We Met and made a reel of it. Obviously. And दोनों को नहीं पता था हम दोनों ही करने वाले दोनों ने सेम ने डाली Yeah. एंड मतलब मैं ऐसे हो गई वो गॉड व्हाट इज दिस टेलीपैथी क्या है ये And both the reels blew up. या both the reels did well and दोनों इम्तियाज अली फिल्म Yep. व्हाट आर द ऑड्स I think it's just the power of good storytelling, yaar. It's Yeah. good storytelling. That's it. या मैंने जब देखा था इतना मतलब द रील वाज सो नाइस व्हिच यू मेड और मैं ऐसे हो गई थी यार ये कितना मतलब इवन द फॉन्ट यू यूज्ड उसमें बीच में I think I take too long to find a font. मेरे को music मिल जाता है, font नहीं हाँ. मिलता. I'm just looking for like first challenge is always music. या Then second challenge is font. You're just like going through fonts and fonts. But I think it's all worth it या when the reel blows up. दैट्स ट्रू पर यार मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे यार लो एफर्ट रील्स जब ब्लो अप होती है ना बहुत बुरा लगता नहीं है. खुद की भी अगर लो एफर्ट ब्लो हाँ, अप खुद की ही बोल रहा हूँ. बहुत बुरा लगता है कि यार इसमें तो मतलब 8-10 घंटे लगाए थे और वो ऐसे अटक गई है 5,000 व्यूज पे. एयरपोर्ट पे कोई रैंडम 6 सेकंड की रील डाल दो. Oh yeah, I remember that one. I was at the airport. I was going to Kasauli, like I was flying to Chandigarh at 5:30 in the morning. I shot something, being half sleepy. Yeah. I posted it as soon as I landed. No sense of इतने बजे डालो. I was just like ये तो क्या मतलब आर्काइव ही करनी है. It's just time pass. डाल दी. By the time I have reached Kasauli from Chandigarh in like those 2-3 hours, that reel had 150K. And I've obviously not archived it. But I was like, that's such a low effort reel. Yeah. So But हाँ ठीक है. I mean, so did you see any conversion from their followers में? no. No? Very few. The big conversion that I saw was the kindness reel that blew up. Jo Kasauli mein, the monkey, that one. थोड़ा सा describe करके बताओ क्या था? So I had basically got to get a haircut. Not a haircut, I'd got to trim my beard, Yeah. which I also vlogged, but that didn't blow up. While I was waiting for my turn to come, I saw this guy struggling to feed a monkey. वहाँ पे गुरुद्वारा था, बाजू में लंगर था उस दिन. हम भी सुबह गए थे वहाँ पे. And he was trying to feed that monkey. He was trying to throw like a piece of roti. और वो पहुँच नहीं रही थी उस monkey तक. So then he asked his friend who was in the shop, can you throw it? So that other old uncle came out and he tossed it upper and the monkey caught it and then he was happily sitting there and having the roti. And I just captured this very randomly because you know there is a creator instinct in us कि हम कुछ भी देखते हैं तो हम बस शूट कर लेते हैं. Yeah. हमारे फोन में ऐसे कितना फुटेज है जिसकी आज तक कहानी नहीं बनी पर वो हमारे पास है. Yeah. It was one of those things. And then I'd taken a break from shoot. मैं बेड पे पड़ा हुआ था रात को. I was just putting something. This is the only reel that I've edited on reels. Oh. I have never ever edited Yeah. something on reels because I don't like the interface.
I'm a Premiere Pro guy. True. I've slowly started using VN because it's convenient to edit on the phone. Have you tried Rush? Premiere Rush? Yeah. On the iPad I have, but not a big fan. Okay. Because I like Premiere Pro too much. So I just randomly put that video together and low effort again, just pick like a trending audio. But I knew that reel will do well. Yeah. I had anticipated 500K to 650K Oh. because it felt shareable. Yeah. And How then do it you hit. decide भी नहीं, how do you get that gut feeling कि bro ये shareable है? पता चल जाता है. ऐसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल. लाइक कभी कभी रील्स जब तुम डालते हो तुमको पता है कि तुम कंसिस्टेंट रहने के लिए डाल रहे हो. You know it inside your heart. Yeah. Like you might show excitement sometimes to yourself also, Yeah. but deep down you know like it's not a great reel, you know. And once you get addicted to telling a story on reels, and it's not just particularly about high effort content, but it's about high value content. When you get used to delivering value and delivering a narrative and delivering a story, तुमको भी पता है कि आज मैंने लेजी काम किया है. Right. पर यार ये चीज मेंटेन करना मुश्किल है ना विद कंसिस्टेंसी. दैट्स व्हाई करते हैं तो लोग. बीच बीच में लो एफर्ट डालना पड़ता है. वो तो इट्स यू नो Instagram's a dictator. Serving the algorithm. It's a dictatorship. They Yeah. tell us what to do and we have to follow. Yeah, Unfortunately. bro. Yeah, sad भाई. सब बढ़िया है, कोई सीन नहीं. कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देते हैं अब, ठीक है. यही मेरे को स्ट्रेस था इस पॉडकास्ट पे आने का. ये सुकृति इज नोन फॉर बीइंग पॉलिटिकली इनकरेक्ट एंड ये फंसाएगी. भाई मैं बता रही हूँ. I'm like bracing for impact. Let's go. नहीं मैं कहाँ गॉसिप यार. अभी पिछले एक पॉडकास्ट किया मैंने, Of तो course. मेरे को सीख मिली है कि हमें गॉसिप नहीं करनी चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए. अच्छा. अगर हम दोनों की किसी दिन कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हो गई ना, तो ओहो हो. हम दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और हमारे साथ और बहुत लोग कैंसिल हो जाएंगे. सो दैट इज द थिंग. So, सबको लगता है this whole creator community is very big, but it's actually very small and it's all in pockets. We all have our pocket of people. True. And the thing is कि अब हम अगर क्रिएटर्स की बात करें, let's just talk about traveling. कैसा रहता है आपका? अभी I have traveled with Shivam. And you have traveled with the creators. Yeah, I have traveled with Onela also. तो हाँ, तो these two are people जिनके साथ it has been very nice. मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, या फिर I did not feel anything negative, I would say. मतलब ये दोनों के साथ vibe सही थी. And if anybody I would want to travel are these two people. But what are your experience been? I've had mixed experiences traveling with Yeah. creators, and it's not about. I think traveling is such a immersive process and experience when you do it so often, right? And we are not people who travel once a year for tourism. Yeah. We travel for work, and Yeah. like we travel all the time. Yeah. So I feel like there is it's again about the vibe. There are some creators with whom conversations are only limited to तुम्हारी engagement क्या है, तुम्हारा ये वो reels, इसका payout, उसका ये brand, ये agency. Whereas with some creators who are also friends now, like you and I traveled together, we didn't really talk about, we spoke about creating content together, but we never got into, अरे हाँ ये ऐसी रील बनाएंगे इस पे 2 million views आएंगे. आ गए तो great, Yeah. but नहीं भी आए तो ठीक है, हमको मजा आया बनाने में. Yeah. Similarly, like I've traveled a lot with Shrestha. Yeah. हम content के बारे में बात ही नहीं करते. He helps me shoot my content, I help him shoot his content, we shoot content together, and we just really immerse in the process of creating that content. I actually like this जो co-creating वाला thing होता है. I love it. Growth heavy space है, पर with some creators that does not happen. Have you had this incident कभी कि not just travel, in general have you sensed this? एक तो होता है यार, एक अपना sixth sense होता है कि you figure कि ये बंदा मुझे सिर्फ इसलिए पूछ रहा because they know that I know how to shoot and all of that. ऐसा हुआ है? Of course. पता चल जाता है. मतलब कुछ ऐसा incident? वो हमारे साथ ही तो हुआ था. But I think like we've obviously experienced it together a couple of times. Yeah. I'm just playing it safe now. Yeah, okay. But no, I think पता चल जाता है because unfortunately
again, I don't know, fortunately, unfortunately, इसमें सही गलत नहीं है. There are some people who travel and they're so focused on their content that it's only about the content. It's not about the experience for themselves. But it's very important to shoot the experience for other people and make a play pretend experience for people. Yeah, I think that's because वो they are coming from that space कि हमें निकालना, because एक वो जोश होता है ना, हम तो हाँ. करके खत्म हो गया है. Right, क्योंकि Correct. like we have done that thing कि हम content, but now we know कि And it's also a personality type. Like, Yeah. it's not like those people are doing it wrong. yeah. It's just that I also did it. I had a phase where I traveled for 6-8 months and I was just about creating content. And then I realized that I was catching all these flights and creating all this content, but was I really traveling? Was I really changing as a person and growing as a person through the process? I was like, yes, I am, but I can grow a lot more. And that's when I decided to prioritize being with myself while traveling, apart from just creating content. So now तो it's reached a point where content तो ऐसे हमारे जहन में है ना, वो तो बन ही जाता है. थोड़ा बहुत हम प्लान कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब On the spot हो जाता है. ऑन द स्पॉट हम अपना कैमरा वाइड एंगल पे हर जगह लगाते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत वहीं बन जाता है. True. And बाकी तो so many stories, we just think, write it on our notes, and then later we merge clips together and create a narrative out of it. But I like to travel with a balance of content भी बनाओ, content भी रहो, a little bit of both. Content भी बनाओ, content भी रहो. Guys, t-shirt. Content is what you create and content is what you should feel after Yeah, creating. ये इसने एक रील बनाई थी, I remember. वो भी ब्लो अप हो गई थी. इतनी मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा था वो डालते वक्त. मैंने अपने फ्रेंड्स को पूछा था, मैंने कहा गाइस ये बहुत प्रीची तो नहीं लग रही? हाँ. एंड दे वर लाइक शायद हल्की सी प्रीची है, पर टेस्ट कर ले, डाल दे. क्यों है? It's actually people say content, वो content ही बोलते हैं कि मैं content shoot करके और आया वो मेरे को हूँ. बहुत इरिटेट हो रहा था. बहुत कॉल्स पे लोगों ने कहा था, तो आई जस्ट वन डे आउट ऑफ शेयर एक viral फ्रस्ट्रेशन. content बनाओ. भाई ये अभी तक बट इट्स चेंजिंग, यू नो. मेरा कल ही एक ब्रांड के साथ कॉल था एंड दे टोल्ड मी, दे सेड शिवम, द ओनली रीजन वी वांट टू वर्क विथ यू इज बिकॉज यू आर अ स्टोरी टेलर एंड नॉट बिकॉज हमारा गोल नहीं है कि इस रील को 50,000 व्यूज मिलने चाहिए, ब्लो अप होनी चाहिए, 1 मिलियन व्यूज. अच्छी कहानी बोलते हैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इट इज चेंजिंग. सो आई गेस दैट्स अ गुड थिंग. Yeah, it is. Because एक तो ना अभी जो नंबर्स देखा जाए, अभी लोग जो है नंबर्स के उस पे ही आते हैं कि ब्रो, एंड दे जस्ट डोंट रियलाइज कि क्रिएटर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है. But see, to be honest, it's a business Yeah. deal at the end of the day, right? When a brand is giving you money, Yeah. so they want a certain ROI to it. यार ROI ठीक है, बट लेट्स से देयर इज समबडी विद a million भी नहीं, 200K है, ठीक है. देयर रील्स आर आल्सो डूइंग गुड, बट देयर ऑडियंस इज सच कि वो उनकी ऑडियंस नहीं है. दे आर जस्ट देयर टू सी. वो बस फॉलो करके रखे कि तुम फीड में आगे देख लिया, लाइक कर दिया. दे आर, आई वुडंट से दे आर नॉट डेड ऑडियंस, बट दे वो ऐसी ऑडियंस नहीं है जो शायद से ROI दे कि अगर तुम कुछ प्रमोट कर रहे हो वो खरीदे, बिकॉज हो सकता है वो वैसी नहीं है. बट वेयर एज इफ यू हैव 20K एंड अगर उसमें जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं, they would actually go and check out what you are talking about. जैसे अभी recently you did that entire thing कि मेरा gear क्या है और क्या gear, and everybody was curious actually. मैं तो थी, like even though I have traveled with you, I was You still, to know everything that's in my camera bag. yeah, still I was curious. नहीं थे जब लिंक भी दे दिया इसने मेरे को. तो it was, yeah, so I was like कि हाँ ठीक है. फिर he asked me कि he asked us, we put a story कि bro और कौन सा लिंक चाहिए. मैंने बोला I want lashes का. Just jeans, no link. But yeah, तो हाँ, so that's what I'm trying to say कि बहुत सारे ब्रांड्स को भी अभी तक ये नहीं पता कि 200K पे जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो. But that also depends from creator to creator. Yeah, Like definitely. अभी जैसे हमने 20,000, वैसे हम दोनों के 20,000 नहीं है, हाँ, बट just उस रेंज में हम ऑलमोस्ट टू 20,000. हाँ. बट हमारे जो करंट ऑडियंस है वो हमने इतनी मेहनत से, इतने क्रेडिबिलिटी से बिल्ड की है. हम उनके साथ एंगेज करते हैं, वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं. Yeah. मे बी नॉट ऑल 20,000, बट जो रेगुलर हमारे लोग हैं जो एंगेज करते हैं, लिखते हैं हमें, वी नो दोज पीपल, राइट? Yeah. एंड इट्स द बूंद बूंद से सागर बनता है लॉजिक. टुमारो व्हेन यू एंड आई हैव 100K ऑल्सो, Yeah. हमने
इतने स्लोली ग्रेजुअली अपना ऑडियंस बिल्ड किया है कि आई चूज टू बिलीव Yeah. कि वो 200K में भी बहुत लोगों की एक क्रेडिबिलिटी है. I'd like to see it like that because at the end of the day you grow slowly, but it's about the kind of audience you have and the kind of things you're selling. There's a very thin line between selling something and being a sellout. Yeah. Your audience Yeah. trusting you, with what you're trying to sell, what you're endorsing. All What those things is- become very What important. is that one one kind of product you would never promote? For me, it's betting apps. I think, yeah, even I wouldn't. Yeah. I actually wouldn't engage in anything that Involves that organically does not fit my narrative of my life. Like anything that I personally would not do, engage with or use, I will not promote. Because how I see it as, I'm not a billboard. जब आप किसी बिलबोर्ड पे ऐड लगाते हो आप उस पे कोई भी ऐड लगा सकते हो. इट्स अ बिलबोर्ड. माई इंस्टाग्राम इज सो मच अबाउट माई पर्सनैलिटी, अबाउट हु आई एम एज अ पर्सन, अबाउट वॉट आई बिलीव इन, अबाउट वॉट आई डोंट बिलीव इन. सो जस्ट बिकॉज अ ब्रांड इज पेइंग मी मनी, आई कांट प्रमोट एनीथिंग. Okay, so अगर जैसे कोई brand आता है and you have never tried okay, you have always talked about being a coffee person. कल को एक टी ब्रांड आता है and you really liked it, so you just tried, उन्होंने बस भेजा, you tried, you really liked it. So would you go out and promote that 100% after trying it after and trying being it? sure that I like it. Yeah. तो यार किसी travel brand से करना है collab. मुझे भी करना है. Travel brands, please. Please reach out. हम ऐसे podcast आपके travel में भी कर सकते हैं. Just imagine. एक Exactly. के ऊपर एक. मुफ्त. So yes guys, तो हाँ, पर मैं कसम से मैं तो कह रही हूँ, मेरे को एक ट्रैवल ब्रांड अगर मिल गया ना, उनको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि वो बोलेंगे आप हमारे कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. मैंने 2019 में एक फिल्म शूट की थी, एक एड शूट की थी किसकी? एक मोबाइल ब्रांड के लिए. अच्छा. और मैं उसके लिए एक इंडिया टूर पे गया था. तो हमने 2 हफ्तों में 10 शहर कवर किए. दिल्ली, कश्मीर, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, कैलकाटा, हम्पी, एलपी, मुंबई एंड one more city that I'm forgetting right now. I hope and wish to get another project like that because I feel like ab mera skill set, What was the project about? it was to promote a new phone Yeah. that this mobile technology brand was coming up with. Yeah. And the idea was that they wanted to promote the camera because all phones are now about the camera, right? Because they are so brilliant. So they reached out to you as a content creator? No. So I was the cinematographer for that whole ad, and there was someone else who was the face of it. I was behind the camera, but I got to travel and I got to build that whole story, and I feel like I can do so much better today when I look back to that opportunity. Like I really hope I get to Yeah. do something like that again. How is it like traveling for work when you're behind the camera? Because I have had that experience and it was not very pleasant. I had this one experience and वो अच्छा नहीं था, and that's when I figured कि नहीं, if I'm traveling, या तो मैं अपने काम के लिए कर रही हूँ, probably not for someone else, until unless we have clarity कि हम क्या करने जा रहे हैं and the boundary is set basically. क्योंकि मैं वहाँ पे 6 बजे उठ रही हूँ सनसेट के लिए, सनराइज के लिए, 6 बजे उठ रही हूँ सन सेट के लिए. सनराइज के लिए, और सनराइज किधर? वेस्ट कोस्ट. कहाँ से? The politically correct was 6 o'clock sunset. PM नहीं बोला. अरे हाँ, तो और मैं सो रही हूँ. हाँ, वैसे इसका स्लीप साइकिल तो ऐसा है कि ये कभी कभी उठती है 6 बजे शाम को, हाँ, ट्रू. और फिर सुबह 4 बजे कॉल कर देगी, अच्छा तुम सो रहे थे क्या? लाइक हाँ, नॉर्मल लोग सोते हैं 4 बजे. एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछ लूं? बस एक ही चीज. और फिर मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है बोलो. ऑब्वियसली आई थिंक इट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. फ्लाइट में कौन सा साइड बैठूं, लेफ्ट साइड की राइट साइड? तुम फ्रीक्वेंट फ्लायर हो, तुम बताओ. आई एम जस्ट लाइक at 4 in the morning, really? हाँ, शिवम That's के साथ Sukriti, grow up. शिवम के साथ मैंने टिकट बुक करी थी, फिर बैठ के शिवम प्लीज अभी बता दो, महंगी हो जाएगी. तो हाँ, so that happened. But no, coming back to what you were saying, I think my experience of being behind the camera has also been good for most of it, especially for travel projects. Yeah. Because while I have been creating content of my own, I have also been doing a bunch of freelance work with it हमेशा से. Okay. तो मुझे आदत है कैमरा के आगे रहने की, पीछे रहने की. As much as I love being in front of the camera, I absolutely enjoy being behind the camera and creating frames Yes. and feeling like an
I'm in command of telling that story through my camera and my viewfinder. I love that feeling. And obviously, my goal, my larger aim in life is to be a cinematographer, be a filmmaker, and not just make reels on Instagram, but hopefully tell stories that matter. Yeah. So in my head, I'm very balanced with being in front and being behind the camera, because I love being behind the camera and finding those frames and telling those stories. And I've also, I think, been very fortunate. I've worked with some incredible people who give you great briefing, great concept notes. There are a bunch of pre-production meetings. तो जब तुम लोकेशन पे जाते हो तुमको मोटा मोटा पता होता है तुमको क्या करना है. बाकी तो देखो भसड़ तो होनी है, वो तो शूट पे होनी है और तुमको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना ही है आंसर्स ढूंढने के लिए. ट्रू. बट नहीं, मेरे को ना अभी एकदम से क्लिक हुआ कि when even we were traveling together, मतलब इवन दो हम लोग कंटेंट तो बना ही रहे थे. हमने सोचा था कि भाई स्टार्टिंग में वी बोथ थॉट कि यार ये तो फुल फ्लेजेड कंटेंट ट्रिप होगा, बिकॉज देयर वर अदर पीपल आल्सो. वो तो एकदम स्टार्ट कर रहे थे हमारे आसपास, तो देव उनके में ना जोश था. I have to do this, sorry. Hello everybody, it is day 1 in the mountains. और आज हम जा रहे हैं ta 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 ta. Oh my god, there were like 50 cameras around us at all times. Yeah. And we were just, and usually somebody says 50 cameras around you, Sukriti, and I would just be like, yeah, sure, like, we're ready. Yeah. And those were 50 cameras where we were just like, अरे यार मैं को नहीं आ रहा. That is true. पहली बार ऐसा हो रहा था bro, because now that it was like कि when I saw that, because मैंने भी एक vlogger की तरह ही start किया था honestly on YouTube. So I did too. You also? Very cringe, but yeah. I'm not proud of my YouTube content. Yeah, I think from when I started. More stuff, yeah. I saw your recent Lahore wala. Thanks, yeah. Beautiful. Second video का timeline premiere pro हुई है. Second video क्या है? लाहौर वाली. नहीं, उसका क्या है आगे का? Like what did you shoot आगे? The first day we went to one pass, second day we went to another pass. Oh. From the same trip, but like more adventures. But we didn't snowboard. So are you like planning to do more YouTube content? मन है पर. Oh, I think no. As much as I'm happy to do it when I'm traveling and I have the opportunity to, I don't think at this point I am looking at doing it full time. Okay. मतलब हाँ, जब ऐसे थोड़ा vibe आ रहा है. Like I'm doing it for myself in a way. I'm not doing it from the POV of this has to get somewhere. But you know, I think थोड़ा सा वही अब वो वापस वो influencer creator वाला चीज आ जाएगा. But I feel like if you are putting out YouTube, because the quality in which you do videos and vlogs, I feel वो तो भाई travel brands ऐसे आएंगे. तेरे मुंह में घी शक्कर. अरे यार सही में, मतलब I sometimes feel कि अगर मैंने travel पे stick किया होता ना, मैं कर लेती, पर मेरे को allow नहीं करते थे मम्मी पापा जाने को बाहर. तो वो अभी से शुरू कर दिया. मतलब शुरू नहीं किया, वो मैं बता देती हूँ मैं जा रही हूँ. Dear Ma, sorry to do this to you. Yes. So just imagine मेरी first work trip जो थी दिल्ली के बाहर, वो थी गोवा. अब मैं कैसे परमिशन लूँ उसके लिए? But हाँ, उन्होंने मेरी cousin को साथ भेजा. तो we'll not get there. But yeah, so I was saying कि जब हम वहाँ पे थे, there were a lot of people around us vlogging. मेरे तो दिमाग में ना बस यही था कि ब्रो यार ये तो हम करके खत्म कर चुके हैं, जोश नहीं आ रहा भाई वापस वो चीज़ करने का for some reason. And I also think for me particularly as a creator, I feel like my YouTube channel never took off as much as I would hope for it. How to. regular were you? So I did not really like follow your YouTube space उतना. मतलब Actually, when I was देखा था. I was fairly active. Like I think I was putting 2-3 videos a month. Okay. And I thought that was a lot. ठीक है. Because I was obviously doing that with 20 other things. Yeah. And when I started, I had these unreasonable aims of, okay, now like silver play button and golden play button, and like that's it, this is my life, you know. Was it because you were influenced by people around you? I think so. And I think we were younger. And you know, I feel like people who start creating content today, whether it is Instagram, YouTube, or any platform for that matter, I feel like they have so much more awareness around them because so many of us are creating content and so many people have been creating content for so many years. When we really started, there was no roadmap. What nobody ever told us, or what I certainly as a creator didn't realize, was that सिर्फ consistency से तुम्हारी ये YouTube की दुकान चलने नहीं वाली. अच्छी कहानियाँ बोलनी पड़ेंगी. That is true. और कहानी बोलना तो आता ही नहीं था. वो तो over the years सीखा है.
And again, there's no like regret in that, because if I didn't do that content, which today I think is cringe, I wouldn't have evolved beyond that. Like today, I'm really proud of some of the narratives that I've put out on Reels or the latest video that I put out on YouTube. Yeah. But when I was putting out that content back in, I never felt like, kya video banai hai? You know, like I would always feel like, I can do better. But like, always, I was just never happy with what I was creating. And when you are only not happy with what you're creating, how can you force other people to watch something that you are only not happy and proud of? मेरे साथ तो उल्टा है. मैं जब भी कोई कॉल क्या बनाया है Nahi. Like now, there are a few content pieces when I put them out. I'm very proud of the effort I've taken. Okay. But I think again, you evolve as a storyteller. So सही है, बढ़िया है. अब मेरे को ये बताओ यार, you have traveled so much, तो कुछ तो crazy stories हुई होंगी. I want to know. बहुत सारी. एक अच्छा बढ़िया सी travel story और एक एकदम worst. I think worst तो कुछ नहीं होता. There's always something nice. Yeah. There's always a silver lining. Like even the experience you're talking about. I feel like we've come back with so many friends who we've stayed in touch with. And just so many memories. I remember on that trip at one point, you know, when you travel to these remote places जहाँ पे network नहीं होता और आप बस शिवम का तो कभी नेटवर्क नहीं होता. ए बॉम्बे में होता है यार. नहीं शिवम का वहाँ पे कहीं ओ हाँ, क्योंकि वोडाफोन यूज करता हूँ मैं और वहाँ पे सिर्फ जियो चल रहा था और समथिंग लाइक दैट. एंड आई थिंक आपको पता है, इट्स बिन अ गुड ट्रिप जब आपके पास नेटवर्क नहीं है, आप नए लोगों को मिले हो, पर उस ट्रिप पे एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है कि ये जो जितना है ना मेरे पास अभी इस मोमेंट में, ये बढ़िया है. इन 5-7 लोगों के साथ जिंदगी निकल सकती है. वो उस मोमेंट में. And this might sound really absurd to somebody who's not experienced it, but for someone who's experienced it in that moment while traveling, you know what I mean. आपको ऐसे लगता है कि बस इन 4-5 लोगों में मेरी जिंदगी निकल सकती है, ये सही है. You know it's a good trip. So with that I have a story कि उस ट्रिप में ना एक so the trip we are talking about, वहाँ पे okay, बता दे, we were talking about स्पीति. हाँ, हम स्पीति हम और कहाँ गए हैं? हाँ भाई, हम स्पीति गए थे साथ में. जामा मस्जिद गए, उसे तो ट्रिप नहीं कहते. So स्पीति गए थे, तो वहाँ पे आई थिंक काजा के बाद हम लोग we split, right? Yes. Yeah. On the second last, जब हम पिन वैली गए थे. Yeah. So काजा के बाद we were supposed to go to Nako together. मतलब ideally the trip was हम तो ऐसा ट्रिप था. तो काजा पे for some reason I still hate that whosoever did this arrangement कि उसने हमको split कर दिया. Random कोई किसी को बिठा दिया था इनके जीप में, अब तो ये बैठ गए, अब नहीं. मैं कहा नहीं, मैं तो शिवम के साथ जाऊंगी. हेलो ऐसे नो. So मैं बहुत जिद किया. तुम तो निकल गए थे before we even reached. We never met that evening. By the time we reached the hotel, y'all had left. ये सुबह की बात है. Okay. सुबह when we सब जीप्स भर रहे थे, जीप और थार और जिप्सी एंड थार जिप्सी जो भी थे और बाकी वो इनोवास सब कार्स भर रही थी. तो इनकी कार में फॉलो, मैंने कहा नहीं आई गो विद हिम ओनली. एंड मैं बहुत जिद पे थी, मैं बहुत जिद की, ठीक है. एंड यू डोंट नो गाइस हाउ स्टबर्न आई एम, ठीक है. तो फिर मैं रोने लग गई. जो ट्रिप ऑर्गेनाइजर थे नहीं मेरे को तो अभी के लिए चले जाओ, शाम को तो मिलोगे ही. आई वाज लाइक ओके फाइन, ठीक है. मैंने कहा शाम तक की बात है. बट गाइज मेरी एंग्जाइटी जो किक इन हुई कि ब्रो नहीं, शाम को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ऐसे से. क्यों आई हैड दैट गट फीलिंग कि एंड वियर्डली हम नहीं मिले. एग्जैक्टली, आई हैड दिस वेरी वियर्ड गट फीलिंग कि पता नहीं, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था. एंड आई वेंट टू हिकिम, वो जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, फिर वहाँ रेस्टोरेंट गए, सब घूम लिया. और इंसिडेंटली उस दिन हमारा कोऑर्डिनेशन इतना अजीब सा था कि सब गाड़ियां अपनी ट्रिप पे थी. वी वर barely together. So we did not even see each other entire day after morning. रात को we got back and I got a news कि ये इनकी कार would not come to Nako. And भाई फिर तो जो मैंने हंगामा किया. And then he called me, he and there was another friend जो उनकी कार में थे हमारे. तो we all got on a call and हमने इसे बोला नहीं सुकृति कल सुबह we'll pick you first, this that. सुबह हो गई. Again there was some coordination, कुछ नहीं हो पाया because our cars left first, ऐसा कुछ तो हुआ. Yeah, I think y'all left from Kaza before we even reached the hotel. Yeah. Because when we reached the hotel and the decision was made that okay we will go to Pin, I think by then y'all were halfway there. Yeah. Waiting on the road. Yeah. तो फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे जब हो गया था, नेक्स्ट डे का भी आधा से ज़्यादा दिन निकल गया था. इट वॉज ऑलमोस्ट 5-6 PM एंड द मोमेंट आई सॉ शिवम, मैं
संगम पे हम सबका संगम हुआ था. It was ख्वाब संगम. Khwab Sangam, and वहाँ पे I met him and I was like, Shivam, you have no clue how much I missed you. वो वाली clip I'll put. Oh my God, we have all ran and hugged each other like as if Yeah. पता नहीं हम बिछड़ गए थे, हम इतने सालों के दोस्त थे. I think But that's what I'm saying. that is one memory I think I will never forget, because I think it was also the time I realized कि bro नहीं, मेरे को तो I mean वो मेरे को friendship का वो चीज़ ना ज़्यादा That hit is a किया. core memory from that trip. Yeah. For sure. तो वो मेरे लिए आई थिंक एक बहुत ही विविड मेमोरी थी जिसमें हम दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. I don't remember what y'all did that day. Y'all were there only. Even I don't. Y'all went to see that some lake, no, which Nako Lake only, Yeah. which you said Hoskas Lake was right. I remember you saying that, yeah. Yeah. And it took us some time because we started really early that morning, but we went all the way to Pin Valley National Park. So by the time we went there and then chilled for a bit and came back, yeah, fun times. So what was your worst memory? That's what I'm saying. On a trip like that, Yeah. where we had a certain amount of friction, Yeah. even on that trip, we have come back with True, friends and true. memories and moments that just stay with us. Yeah. And, you know, we still look back to them so happily and so fondly. So I think when you travel and you become a traveler, Yeah. something shifts inside you. Yeah. You become more free as a person. You stop taking things too literally कि अरे सब गड़बड़ हो रहा है. तुम सीखते हो कि उसमें से भी solution कैसे निकाले. ठीक है, सब गड़बड़ हो रहा है, but what's the best I can do with this situation? And that's the beauty of travel. You just change as a person completely. That is true. Yes, guys. And I feel I think we should travel more यार, साथ में करना We चाहिए should. हमें. Because I think if it was our first trip and First वो trip इतना properly, yeah. memorable हो गया in spite of like other things happening around us. But see, that is part and parcel. I think when you travel with a big group, थोड़ा बहुत तो confusion normal है. Yeah. So part नहीं, and parcel. हम I guess. अपनी अगली ट्रिप खुद बनाएंगे. आइटनरी भी नहीं बनाएंगे. We'll go with the flow, I feel. That's the best way to Yeah. travel. एक मोटी सी itinerary बना लो, ये चार चीजें हाँ, करनी है और बाकी ये तो है. कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही टाइम. Yeah. Go with the flow. भाई उदयपुर चलते हैं, वो वाला ये जवानी है बहुत दिवाली. गर्मी है यार अभी उदयपुर में. अरे मेरे को ये जवानी दिवाली पार्ट 2 शूट करना है. मैं सबको विंटर में. विंटर तो Okay. बहुत गर्मी है. या अच्छा हाँ, तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं ऑन दिस मैनिफेस्टेशन काउच. What you think your current job? या आई एम करण जोगर नाउ. Like now on this couch, everyone's supposed to say, "I wish I get to date this person, and then it will happen." यस, आई वांट टू डेट. रहने देते हैं. नहीं रहने देते छोड़ो. हैं. ये भाड़े का couch है. अच्छा तुम बताओ ना, हम इस इधर डिसाइड करते हैं ऑन दिस पॉडकास्ट कि कहाँ जाना है. कि कहाँ जाना है. बताओ. एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट हम वहीं शूट करेंगे. I think पहाड़ों में ही कहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारा ओरिजिनल प्लान था पहाड़ों में podcast करेंगे. या गाइस, वी वर सपोज्ड टू शूट इट. पर मतलब हमें ऐसा. वक्त ही नहीं मिला. 8 दिन थे हम पहाड़ों में, फिर भी वक्त ही नहीं मिला. यस. 7 nights 8 days. यार डिड रियलाइज एक घंटा नहीं निकाल पाए हम. ओह हाँ भाई, हम क्योंकि गाइस जिप्सी पे थे. और सुकृति सोई जिप्सी में, जहाँ पे लोग बैठ नहीं पा रहे थे. ये लड़की सोई है और ऐसे सोई है कि घोड़े बेच के सोई है. भाई वो फर्स्ट हमने तो घर बसा लिया था जिप्सी पे. बताओ ना, फर्स्ट डे जो लोगों को पता ही नहीं था सुकृति है. सो फर्स्ट डे एक्चुअली हम जिप्सी में नहीं थे, हम इनोवा में थे. फिर मैंने गाड़ी चेंज की, फिर सुकृति आ गई उस गाड़ी में. हाँ, तो लंच के बाद हम लंच के लिए रुके थे कहीं, तो वी वर ऑन आवर वे टू स्पीति और हाँ. हम सब गाड़ी से उतरे, लंच करने गए. सुकृति गाड़ी में सो रही है. हमारे ड्राइवर भैया भी आ गए, तो हमने उनको पूछा कि अरे सुकृति कहाँ है? सो रही है गाड़ी में. वी वर लाइक ओके, पहाड़ों में गेस इज सेफ. लंच के टाइम हेड काउंट था, तो देर लाइक एक इंसान मिसिंग एंड देन हाँ. सुकृति का सो रही है. हम खाना खा के हमने वहाँ पे फ्रेश लाइम जूस पिया, बहुत टाइम पास हाँ. करके हम वापस आए. ये सोई हुई है. इसको कोई होश नहीं है कि ये ट्रैवल. दैट वाज सो अब्सर्ड. और फिर वो सोई हुई है. उसके बाद मैं किसी और के साथ बाइक पे चला गया क्योंकि आई वांटेड टू शूट सम कंटेंट. आई वांटेड टू Yeah. एक्सपीरियंस बीइंग ऑन द बाइक इन द माउंटेन्स. या. आवर लेडी इज जस्ट स्लीपिंग. अब मुझे पता नहीं चला शिवम कब गया, कहाँ गया. तब मेरे को कोई होश नहीं था. हाँ, शी वाज आउट, नॉक्ड आउट. गॉड नोज व्हाई. या एंड देन वी रीच्ड चिटकुलम पहुंचे, तब हम मिले. अरे हेलो शिवम, हाँ. फ्रेश नाउ. रक्षम जब हम शाम को हाँ, मिले. करेक्ट रक्षम. करेक्ट. मेरे में हेलो आई एम फ्रेश. Oh boy, that was crazy. दैट वाज. Sleeping like जैसे पता नहीं कितने दिनों से सोई नहीं थी ये लड़की. हाँ नहीं, मैं रात को सोई नहीं थी, मैं स्पेसेस पे बैठी थी. ये रात को ट्विटर के नोटिफिकेशन बंद कर दिए मैंने.
iPhone बोलता है time to sleep, focus mode shifted to sleep. Sukriti Grover is now live on Twitter. Yeah, why don't you use Twitter? Cause मुझे time पे सोना पसंद है. इसको बोलो ना, ये है हमारा ट्विटर हीरो. हम तो Twitter friends थे. अच्छा ओ. हम Instagram पे तो बाद में follow किया हमने, Twitter पे भी. But I like to sleep on time. I love my sleep. ठीक है, सही है, बढ़िया है, कोई सी नहीं. अच्छा हाँ, हम जगह डिसाइड कर रहे थे पहाड़ों में. I think that's a safe bet. जा सकते हैं. I've never been to Leh. I have been to Leh. We can go to Leh or we can go to something crazier. Yeah. But mountains. I think let's head to the mountains. Yeah, ठीक है, mountains guys. Next podcast from mountains. But मैं एक बारी ले का थोड़ा सा वो दे देती हूँ कि हुआ क्या था. So we went on bike ride, गए थे Magnetic Hill, me and my college friends. I told you this story. No, I'm assuming. Okay. बस बाइक पे गए थे तो गिरे ही होंगे. हाँ, नहीं ऐसे नहीं गिरे थे. सुकृति ग्रोवर का व्लॉगर फेज था. So सुकृति ग्रोवर was vlogging and चूतिया तो मैं हुई, तो मैं व्लॉग कर रही हूँ. अब नाउ एक ना चाय वाला है, अगर इफ यू हैव बीन टू मैग्नेटिक हिल आई पुट I've not. तो मैं हाँ, तो देयर इज अ चाय वाला एट मैग्नेटिक पॉइंट. तो वहाँ पे बाइक सबने खड़ी करी एंड दे वर नॉट जस्ट बाइक्स, दे वर कोई बुलेट है, कोई नॉर्मल बाइक है, कोई स्कूटी है, अलग अलग सब ऐसे खड़ी है. मेरे को टशन में आना था, मैं बुलेट में जाके बैठ गई व्लॉग करने के लिए. और बुलेट वॉज फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा. बुलेट गिरी, डोमिनोज इफेक्ट. डोमिनो इफेक्ट हो गया वहां पे, सारी बाइक्स गई. डोमिनो इफेक्ट, सारी बाइक्स गई. एंड आई वाज लाइक, और उस डोमिनो के बीच में सुकृति का बन गया पिज्जा हट. हाँ, मेरा पिज्जा हट हो गया गाइस. एंड नाउ द थिंग वाज vlogging didn't stop. Of course, cause सुकृति को लगा यही मेरा चांस है to blow up on the internet. Yeah, so I was vlogging still and नहीं, अब ये मेरे दिमाग में अक्ल थी तब, ठीक है, तो मैंने उस टाइम बंद किया था कैमरा. एंड बट मेरे हाथ में कैमरा था बंद करने के बाद भी. एंड बीच में एक लड़की जो स्कूटी पे थी, उसका पैर गया, who had to drive back. So इन लोग को लगा, एंड मैं वहाँ गई थी to help her. These guys thought, because we were all college friends, इनको लगा कि भाई मैं vlog करने आई उधर. ओ तेरी. एंड भाई मेरा भी पैर गया भाई था, बट मैं गई बिकॉज आई थॉट कि वहाँ कुछ ना हो जाए, मैं तो पीछे बैठी हूँ, मेरा क्या है. तो आई जस्ट वेंट देयर और उन लोगों को लगा व्लॉग करी. एंड दीज गाइज रेस्ट ऑफ द ट्रिप दे डिडंट टॉक टू मी. दे वर लाइक, सुकृति हाइट्स होती है. मैंने कहा ब्रो आई एम सॉरी दिस दैट. अगले दिन खारदुंगला गए, मैंने कोई रैंडम लोग को बोला फोटो खींच दो मेरी. आई पुट द फोटो हियर. तो बच्ची खींची रैंडम ने. सो दैट हैपेंड. तो ये काफी मेरे साथ क्रेजी इंसिडेंट हो गया. उसके बाद से मैं अपने दोस्तों के साथ व्लॉग करना बंद किया हुआ है. लाइक व्हेन, अभी हम दोस्त हैं ऑफ कोर्स, बट आई डोंट व्लॉग विद देम बिकॉज अब वो मेरे को पीटीएसडी हो जाता है. ब्रो भाई ये तो Fair enough. yes that नहीं, I think you learn to draw a line with some people because when people are non-creators, they feel like you're not living the moment with them. You're only shooting content, and we feel like we're balancing it out very well. So I also, with a certain set of friends now who are non-creator friends, I choose to take it as a non-content trip and just chill. बट पता है क्या, when these people see the content out, जैसे मैंने कुछ व्लॉग्स कॉलेज में किए थे, कुछ था नहीं तो कॉलेज में जाके व्लॉग करना. नो, माय कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी नाइस, तो वो अच्छा लगता है दिखने में. तो वो अभी when they see my vlogs, अरे भाई यार क्या बढ़िया था. मैंने कहा अब क्यों बोल रहे हो, उस दिन तुमने मेरे से ऐसे किया था. So that was something. तो उसके but still till date I don't have the guts to pull out my phone camera also, ऐसे कि फोटो भी खींचने को फोटो खींच लूँ ऐसे. Permission ले रही हूँ. So yeah, बहुत खौफ है मुझे. So yeah, that. But हाँ, चलो अब हम एंड कर देते हैं. Do you have anything else to share? Any cool story? Anything you would want to talk about? I think this has been great. हाँ. And I think there are a zillion more stories, but Badmaaash Baatein is going to have a zillion more episodes, so stay tuned. Yes, guys. And पता है शिवम तो अभी है. Like शिवम तो है. I'll get him again, guys. मतलब वैसे कुछ लोगों के You do realize nobody has said that they want me back here. हाँ, तो वही ना, बोलने की जरूरत नहीं है. He will come. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट तो पहाड़ है. तो पहाड़ है. Done. Cool. This was Mumbai edition. Next will be mountain edition. Then there'll be Delhi edition. There will be beach edition. Beach edition. और बाकी edition recommend कर. आप बता सकते हैं. Also guys, comment below आपको क्या लगता है. Spotify पे comment भी कर सकते हैं. कर सकते हैं. What? YouTube पे भी comment कर. YouTube? हाँ. She thinks I'm a noob. I know you can comment on YouTube, Spotify dude. पे भी कर सकते हैं. You can do Q&A also on Spotify. You can do a lot of things. Are you sure you're talking about Spotify and Yeah. Instagram? Yeah. You can add questions what you liked about the podcast. Yeah. All platforms are getting too like
Yeah. Everything is in every platform, हाँ. but ठीक है, whatever sails the boat. तो ऐसा सीन है उस पे. So yes, and if you're listening to this on Apple Podcast, तो 5-star rating भी दे दो और जो अच्छी चीजें हैं सब कर दो, ठीक है? And follow Shivam. अब handle are you changing or not? Let's go with the balcony of Balcony infinity of for now infinity, because guys. it's not changed yet. Yes, all the links to his socials are linked below. तो please जाके आप please check out करिए. He's very sassy और आप बहुत सारे reels भी बना. हमें पिकअप लाइंस नहीं आती जैसे इनको आती हैं, पर But थोड़े बहुत हमारे लिए एस्थेटिक्स हैं. इनके aesthetics, his aesthetic game is so strong, guys. Thank you. So you must check his profile out. मतलब भाई beautiful. तो Thank you. हाँ, do that and I'll see you guys super soon with another one. Till then, please subscribe कर लो, अच्छी चीजें कर लो, and yes, bye. And keep seizing infinity. Ooh. That's how we roll.